सोहेल भाई। हाय इब्राहिम भाई, बोलिए ना। एक क्वेश्चन था मेरे पास। बोलो ना भाई। इसके नेट पेयरिंग के आपने वीनेट जो पेयरिंग। टास्क, हाँ मतलब हम्म। ए और बी, राइट। मतलब 1 और 2, उसके अंदर फिर दो ये बनाने बोले थे आपने विनेट। सबनेट्स। हाँ, तो एक मतलब समझो विंडोज मशीन, एक लिनक्स मशीन, राइट। राइट। एक मिनट रुको, मैं फोटो निकाल। देखो, लोकेशन ए, लोकेशन बी, ओके। और उसमें 2 विनेट्स लोकेशन ए के अंदर, एक विंडोज और एक लाइनक्स, ओके। हम्म। और लोकेशन बी के अंदर भी 2 विनेट्स विंडोज और लाइनक्स। तो अभी इसमें 4 विनेट पेयरिंग करना है अपने को। हम्म। तो चार में से अभी जैसे समझो एक पे हमने मतलब 2 विनेट जो है उस पे, एक पे कर लिया, विंडोज पे कर लिया, तो लाइनक्स भी और विंडोज कनेक्ट हो गया लोकेशन ए के अंदर। समझ बोलो रहे ना हो? आगे। हाँ। और मतलब मेरा बोलना मतलब था कि जैसे अगर हम लोग ने लोकेशन ए में एक विनेट पे, विंडोज पे जो विनेट 1 है उसके ऊपर विनेट पेयरिंग लगा दिया, तो विनेट 2 जो है लाइनक्स वाला, वो दोनों कनेक्ट हो गए, राइट। एक मिनट इब्राहिम भाई, क्वेश्चन रिपीट करो ये। और योगेश, आर यू लिसनिंग? योगेश भाई। Yes, well, Okay, can you yeah, answer yeah. Ibrahim bhai's question? If you have got it already, answer it. If not, I'm asking him to repeat, and let's see if you understand this. If not, I'll answer this. और question समझ गया मैं इब्राहिम भाई आपका, but still repeat it. Explain your doubt to Yogesh bhai, and let's see if he can explain it to you. हाँ योगेश भाई, जैसे अपना जो टास्क था ना, सोहेल भाई ने दिया था लोकेशन ए, लोकेशन बी और 2 विनेट्स क्रिएट हाँ करना है। हाँ हाँ एक विंडोज पे, एक लिनक्स पे, और दूसरे अंदर भी एक विंडोज, एक लिनक्स पे, ओके। तो अभी हाँ इसमें विनेट पेयरिंग 4 होगी, राइट। तो हमको हाँ, सबको कनेक्ट क्या करना है ना। सबको कनेक्ट करना है, बराबर। हाँ, अभी समझो जैसे लोकेशन ए में विंडोज के ऊपर हम लोग ने विनेट पेयरिंग लगा दिया, हाँ तो लोकेशन ए वाला ही जो सेकंड विनेट है वो कनेक्ट हो गए दोनों, फर्स्ट और सेकंड, हाँ राइट। फिर हम लोग ने क्या किया, सेकंड जो लोकेशन ए में जो सेकंड विनेट है, तो उसको हम लोग ने समझो कि लोकेशन बी के सेकंड विनेट पे लगाया, हम्म, ओके। वो दो कनेक्ट हो गए, समझ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, समझ गया। फिर लोकेशन बी में जो है ना, ए जो फर्स्ट वाला विनेट है, जो विंडोज वाला लोकेशन बी में, उसके ऊपर हाँ विनेट पे लगाया क्या, इसके लिए लोकेशन ए वाले के लिए जो फर्स्ट वाला है। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब क्रॉस कैसा, दूसरा विनेट कैसे क्रॉस होगा, मतलब चार को तो हम लोगों ने कर दिया कनेक्ट ऐसा, 1 2 3 4, लेकिन समझो लोकेशन बी के सेकंड वाले को कनेक्ट करना है लोकेशन ए के फर्स्ट वाले को, तो उसमें कैसा, मतलब और एक विनेट पेयरिंग लगाना पड़ेगा क्या? हाँ, बेसिकली मतलब लोकेशन ए में दो सर्वर्स है, लिनक्स हाँ, विंडोज, उन दोनों का लगाना पड़ेगा। लोकेशन बी में उन दोनों का भी पहले पेयरिंग कर देना पड़ेगा, और ओके फिर बाद में अपने को लोकेशन ए में एक सर्वर से लोकेशन बी के दोनों सर्वर को पेयरिंग करना पड़ेगा, ओके। तब तो जाके फिर वो चारों कनेक्टिविटी में आ जाएंगे। हाँ, तो मतलब लास्ट में ऐसा होगा कि अपने को एक सर्वर पे, मतलब जो है ना, जैसे समझो कि एक विनेट पे 2 विनेट पेयरिंग करना पड़ेगा, ताकि क्रॉस भी कनेक्शन हो जाए। तो समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? हाँ हाँ, नहीं, तो तीन वहीं करना मैंने एक्चुअली पड़ेगा। मिक्सअप हो गया था। एक ये मिनट पे तीन करना पड़ेगा, और वाइस वर्सा दूसरे साइड से अटैक। यस इब्राहिम भाई, मल्टीपल मतलब एक हो या दो हो, जैसा भी रिक्वायरमेंट हो। यस, मल्टीपल वीनेट पेयरिंग्स होगी आपकी। यहाँ जैसा जो सिनेरियो मैंने दिया था, एक वीनेट पे मल्टीपल पेयरिंग्स, इट इज पॉसिबल, और वही करना होगा आपको। ओके ओके ओके, समझ और गया, थैंक यू वीनेट सर। पेयरिंग जो है ट्रांजिटिव नहीं होगी, मतलब आपने ए से बी को जोड़ दिया और बी से सी को जोड़ दिया, दैट डज नॉट मीन कि ए और सी अपने आप जुड़ गई, ये नहीं होगा। तो फिर से अपने को ए पे मतलब करना सी पड़ेगा। और ए को फिर से करना पड़ेगा, जहां जहां भी करना होगा आपको। मल्टीपल वीनेट पेयरिंग इज पॉसिबल, इनफैक्ट दैट इज द करेक्ट वे टू डू इट। वही एक्सप्लेन ओके करने के लिए मैंने उस तरह का एग्जांपल आप लोगों को दिया था। ओके, थैंक यू सर। क्लियर? ठीक है गाइस, वी आर यस यस। वेटिंग फॉर अदर्स टू जॉइन, एंड देन विल स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिकल ऑफ
VPN, site to site VPN, point to site VPN for end users to get connected. So I think we have, let's wait for 2 minutes more, 2-3 minutes more. I do not want these guys to skip on this session. Meanwhile, do you guys have any questions? एक कल का दिन ये हो गया था, और सैटरडे संडे हम छुट्टी लेते हैं, so 3 दिन का गैप हुआ. I hope you guys did read something और practice वगैरह कुछ किया हो आप लोगों ने. So do you guys have any questions? Yes guys, anyone, कोई question है आपको किसी तरह का? साइट टू साइट, पॉइंट टू साइट, जितने अब तक हम लोगों ने किया, इसमें कोई भी क्वेश्चन है किसी का? Did you guys try doing that? Yes, I was not able to associate the NSGs to all the VMs. And what error did you get? Like I didn't get any error actually, but when I was making changes in one VM, it was reflecting in others. Maybe your NSG was applied. I just deleted your setup. Sorry, I didn't know that you are facing that problem. But let's talk about NSG here. Meanwhile, while others are joining. So if we talk about NSG, if you go on NSG, then you can see if it is affiliated with any subnet. Now if you see ये किसी subnet पे नहीं use हो रहा है, so इसका मतलब है या तो ये बिल्कुल भी use नहीं हो रहा है, या तो फिर individual computers पे use हो रहा है. So you can come here and check कि किन computers पे use हो रहा है. And now I know that this is being used on this NIC. NIC मतलब क्या हुआ? Computer ही हुआ है, right? Right. So you could come here and check किस पे applied है, and if you do not want this NSG to get applied on some other computer जो इसमें है, you simply have to come here और यहाँ से इसको आपको disassociate कर देना है. Is it clear? Yeah, but in that practical जो आपने दिया था वो diagram, उसमें था कि एक NSG के अंदर वो चारों VMs थे ना, तो So you have to come here and associate, and here you will see your जितने भी extra. मेरे पास एक ही निक है तो वो दिख रहा है already. अगर आपने 3 virtual machines बनाए होगे तो वो निक यहाँ पर दिखेंगे आपको, and you had to associate. And in by chance अगर हाँ, I remember now, you created multiple NSGs, right? हाँ, yeah. So I'll tell you how it happens. So now let's say that I have a virtual machine. This virtual machine I have. ये virtual machine बनाते वक्त मेरे पास जो है NSG already बन गया था एक, ठीक है? I selected some options for some reason, or I did it deliberately. For anyhow, I got one NSG while creating this machine. I got one NSG. NSG का नाम क्या है? इस वाले इस पे लगाया फिलहाल इंटरफेस पे, और ये वाला NSG जो है इसका बना हुआ है. So I'll go and check which is the NSG. This is Tsoft NSG एक बन गया है. Where is it? It is in East US. Now, if I want another machine with the same NSG, first thing I'll have to make sure that I am creating a virtual machine within the same region. Yeah. Okay, because same VNet is the criteria. Let's say that I'm creating a machine here. Resource group could be anything, that doesn't matter. So I'm selecting any resource group. I do not want any infrastructure redundancy. I've done this, let's say. And here. So where do we select NSG? Here it is, network security group. So if I select none, this machine will be a machine without NSG, and then you can go back here, यहाँ पर later, and later you can go to this यहाँ पर, and you can search कि कौन सी machines है जो without NSG है. You will get that here. You will get that here. जैसे यहाँ पर दिखता है, you can associate. If a machine already has NSG, वो इस तरह से grayed out दिखेगा आपको. You will not be able, because can we have 2 NSGs on one resource? No. No. So either you select none and proceed. If you select basic,
it is creating a new NSG with Yeah. default rules and whatever rule you select here. 6 रूल जो डिफॉल्ट है वो, और उसके अलावा ये 4 रूल. And if you want to an existing one yahin se karna hai, so you come here and then you select a create a new one, or you get an option here to use that NSG. Yeah, but ठीक है, but इसके बाद when we change the inbound security rules वगैरह, तो उस पे वो सब पे same reflect कर रहा था in all the 4 VMs. Yes, obviously it will, because if you have 4 VMs connected here, that is the functionality. I mean, if this is NSG, right? This is my network security group. My network security group is connected with 4 virtual machines or 5 virtual machines. And if I make any changes in inbound security rules, right, inbound security rule, तो वो पांचों मशीन पे अप्लाई होगा. इसीलिए वो बना हुआ है कि पांचों मशीन पे. Forget 5 machine, if I apply it on a subnet, and if that subnet has 1000 machines or 250 machines, तो वो पूरे के पूरे 250 machines पे अप्लाई होगा. That is the functionality. Okay, तो फिर वो practical कैसे होगा? क्योंकि You इसमें तो had to सारे categorize, bifurcate them. अगर आपको अलग NSG ही बनाने थे, then why would we read a topic as an ASG? ASG को हम अलग से topic लेते ही क्यों? What was ASG? ASG is application security group, which is another bifurcation within network security group. So if you create here a rule, this is, let's say, this is your NSG. This NSG is applied on 10 virtual machines. Now out of those 10 virtual machines, 5 पे मुझको चाहिए RDP चालू रहे, 5 पे नहीं चाहिए. ठीक है. So inbound rules में आके पहले तो मैं कोई RDP चालू कर दूंगा सबके लिए, something like this. So RDP is on for everyone. Now I want to highlight those 5 machines जिस पे मुझको RDP नहीं चाहिए. So I'll come here. Now if I select any, सब कुछ कवर हो जाएगा. If I select IP address, in case there are only 5 machines ना, तो मेरे लिए easy है. मैं 5 IP address यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ. Is it a big deal to type 5 IP address? No, right? I can do that. But what if I say there are 500 machines now? 1000 में से 500 पे RDP चाहिए, 500 पे नहीं चाहिए. उसमें भी अगर कोई सेम आईपी लेवल का है, सेम साइटर ब्लॉक है, तो आई कैन यूज आईपी ऑल्सो, कि मुझको पता है कि वो सारे के सारे 500 मशीन्स जो है इसी साइटर ब्लॉक में है. इफ दिस इज द केस, देन आई कैन अचीव इट यूजिंग आईपी एड्रेस ऑल्सो. बट ये भी केस नहीं. मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो जो 500 मशीन है ना यार, वो सारे मिक्स एंड मैच है. 1000 मशीन्स में सारे मिक्स एंड मैच है. तो फिर नेक्स्ट लेवल क्या हो गया बाइफर्केशन का? या वो मैंने एसोसिएट कर लिया था. Then what is the problem? If you associate this, अगर उन मशीन पे आपने एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप लगा रखा है, and here you are selecting that only no RDP वाले, जिस पे भी मैंने एक ये लगा रखा है एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप नेम्ड नो RDP, ये रूल सिर्फ नो RDP पे ही अप्लाई होना चाहिए. जहां पे आप ये करोगे कि RDP is not allowed. Simple. See RDP. अच्छा, वो ना सारे VMs के अंदर दिख रहा था, तो मुझे लगा शायद वो सब पे अप्लाई हो दिखेगा, गया. that is fine. Yes, I got your question now. दिखेगा, that is fine. बट वो सब पे अप्लाई हो रहा है? नो, दैट इज नॉट द केस. ये सब पे अप्लाई हो रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोर्स एनी है, डेस्टिनेशन एनी है. बट द मोमेंट यू चेंज योर सोर्स एंड डेस्टिनेशन, तो नैरो डाउन होता रहेगा. जैसे यहाँ पर ये ट्रैफिक जो है अलाउ कर रहा है, लेकिन किससे? सिर्फ लोड बैलेंसर से. ये दिखेगा सब पे, बट अप्लाई सिर्फ उसी पे होगा जो मशीन्स लोड बैलेंसर का हिस्सा है. उसी तरह से यहाँ पर व्हेन यू सेलेक्ट ASG, तो दिखेगा सब मशीन पे, बट अप्लाई सिर्फ उन पे होगा जो ASG जिस मशीन का हिस्सा है. Okay, got it. Got it? Yeah. Okay, guys. So let's start with how many we have. Amit, we have. Okay, let's start. So we'll start with our point to site wala networking. Here it is. So before that, a quick revision, very quick. When we start our course, हमने basics पढ़े, सब कुछ पढ़े. Then we started topic as a compute में we started as a virtual machine में we clicked here and we started discussing left panel. We discussed overview, we discussed activity log, we discussed IAM, we discussed tags,
डायग्नोस वाला डिस्कस किया, एंड देन वी वर ऑन नेटवर्किंग वाला पैनल, और नेटवर्किंग में ये सब हम पढ़ रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर नेटवर्किंग में अगेन वी सॉ वीनेट। वीनेट क्या होता है हमने वो देखा, अब दो वीनेट की पेयरिंग कैसे होती है, वी सॉ दैट। रीजनल वीनेट पेयरिंग क्या होती है, ग्लोबल वीनेट पेयरिंग क्या होती है वो हमने देखा। वीनेट पेयरिंग ओवर द वीपीएन क्या होता है वो देखा। वीनेट पेयरिंग ओवर द वीपीएन, व्हाई वुड वी यूज, कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द सिनेरियोज जहां पर वीनेट पेयरिंग होगा ओवर द वीपीएन, या फिर सब वीपीएन बोल दो आप उसको, चलिए वीनेट पेयरिंग भी मत बोलो। Like outside Azure, we need to connect. Okay, Outside what else? We need to connect two machines. Tenant to tenant. Sorry, what was that? From one tenant to another tenant within Yes. Azure, Yes, what else? and from on-site to Azure Cloud, on-site premises to Azure Cloud. Perfect. So it could be from Azure to Azure, Azure one tenant to another tenant, even within subscription also, right? Didn't we see? Yes. Subscription to subscription also. The second thing was subscription to subscription, Azure to Azure, Azure to GCP, Azure to AWS, could be anything. Got it, guys? Yes. Yes. Okay. So we saw that all of those are will come under which umbrella? We discussed there are two VPN. There are two chunks of VPN, or two huge categories of VPN. Which are those? ये सारे हमने जो डिस्कस किए, क्या कौन सी VPN हो गए? Yes, guys. VNet to VNet. No, VNet to VNet, it is a part of that. जितने हमने ये डिस्कस किए हम लोगों ने, इसमें किस तरह की कनेक्टिविटी हो रही है? इट्स लिमिटेड कनेक्टिविटी, इज 24/7 कनेक्टिविटी, किस तरह की कनेक्टिविटी है इसमें? 24/7 कनेक्टिविटी है, किस तरह की कनेक्टिविटी है? Okay, it will be site to site. Yes, we are connecting two sites here, right? जितने भी हमने डिस्कस किए, we are connecting two sites here. The next one is point to site. What do we connect in point to site? पॉइंट टू साइट में हम एक यूजर को कनेक्ट करते हैं किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर से. सो हमने एज डिस्कस्ड, कोई यूजर 24/7 कनेक्टेड नहीं रहेगा, राइट? यूजर विल कनेक्ट जब रिक्वायरमेंट है तभी. मे बी उसका शिफ्ट का रिक्वायरमेंट है तो 8 घंटे 9 घंटे वॉट एवर इट इज. मे बी कोई रिमोट लेना है 1 घंटे के लिए कनेक्ट कर लिया, वॉट एवर इट इज, बट इट इज ऑन डिमांड. व्हेन यूजर वांट्स टू कनेक्ट तभी वो कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होगी. सो दैट इज व्हाट अ पॉइंट टू साइट कनेक्टिविटी, राइट? So point to site connectivity, we were discussing how to work on point to site connectivity. Point to site connectivity में क्या होगा? This virtual machine, we have been accessing this using public IP address. Public IP से कैसे remote ले पाते हैं हम? Why are we able to take remote using public IP without doing anything? Why? What is the reason behind it? That we don't require any VPN, we don't require anything. Why? How come we are able to take remote or ping directly using this one? Public IP, why do you think? Because the virtual machine is connected to the internet through the public IP, and our Public network IP is इसलिए guys, because public IP is nothing. Public IP जो है आपका एक ये है, public IP आपका एक नेटवर्क का हिस्सा है. इंटरनेट अपने आप में एक नेटवर्क है विच इज कनेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये पूरा एक नेटवर्क है, एंड बिकॉज यू यूजिंग पब्लिक आईपी, सो यू आर इन वन नेटवर्क. आपके घर के कंप्यूटर पे भी एक पब्लिक आईपी होगा, चाहे वो राउटर के थ्रू हो, कहीं पर भी हो, इफ दैट इज इन थ्रू इंटरनेट. एंड यहाँ पर भी यस, एंड इट इज यूनिक. दैट इज करेक्ट. इट इज यूनिक एड्रेस इन वन नेटवर्क. बट द मोमेंट आई से
कि ये इसको मैं निकालना चाहता हूँ बिकॉज दिस इज नॉट सिक्योर, प्लस दिस इज वेरी कॉस्टली, प्लस दिस इज लिमिटेड। पब्लिक आईपी हर कंप्यूटर को अगर पब्लिक आईपी हम देने लग जाएंगे, पब्लिक आईपी खत्म हो जाएंगे। देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ पब्लिक आईपी, राइट। 5 क्लास है जिसमें से हम कितने क्लास यूज करते हैं रेगुलरली? 3 yes। यस, 3 क्लास। डी और ई क्लास जो है वो रिजर्व्ड है, ए एंड बी एंड सी हम यूज करते हैं। ए बी और सी में भी जो है आर वी यूजिंग कंप्लीट रेंज 0 से लेकर 192 तक है, जीरो वो पूरी रेंज पब्लिक के लिए अवेलेबल है? नहीं, उसमें से भी हमने क्या कर रखा है, काफी हद तक आईपीएस को प्राइवेट में डिवाइड कर रखा है। सो ये सब करके बहुत ही लिमिटेड रेंज होता है एक पब्लिक आईपी का अगेंस्ट द यूजेज विच वी हैव नाउअडेज। जब इनको बनाया था तब किसी ने नहीं सोचा था कि आईपीएस कम पड़ेंगे, हेंस वी आर कमिंग अप विद IPv6 वर्जन, दिस इज IPv4, बट वट एवर इट इज। तो आईपीएस हम लोगों के कम पड़ जाते हैं तो वो कॉस्टली होते हैं। इट्स वेरी ऑब्वियस एंड बेसिक थिंग कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी एंड सप्लाई कम होगा उसका कॉस्ट बढ़ना इज मस्ट। तो पब्लिक आईपी कॉस्टली है, सेफ नहीं है, किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं, हेंस आई डू नॉट वांट टू यूज पब्लिक आईपी। I want to access my machine, I want to transfer my data, I want to RDP to my machine, everything I want to do using my private network. So when can I do this using my private network? Only when this machine, this server and my server जहां से, या my machine client machine जहां से मैं रिमोट लेने वाला हूं, वो दोनों एक नेटवर्क में हो, राइट? आर यू गाइस गेटिंग इट? yes sir। सो वो दोनों एक नेटवर्क में अगर हो तब इट इज feasible टू टेक रिमोट यूजिंग प्राइवेट आईपी। ना वो दोनों एक नेटवर्क में होने का क्या मतलब हुआ, मैं अपने इस मशीन को, यहाँ तो सिंगल मशीन है बट एक्चुअल एनवायरनमेंट में तो 10 12 15 50 100 500 मशीन हो गए। मैं इन सबको किसी क्लाइंट के नेटवर्क में तो नहीं ले जा सकता, होम नेटवर्क में, राइट? और हर बार एक क्लाइंट जो है, एंड यूजर है, वो अब एक अलग नेटवर्क में बैठा है। वो कभी आज इसके राउटर से कनेक्टेड है, कल अपने फोन से कनेक्टेड है, उसने अपना राउटर चेंज कर दिया, वो हर बार एक नए प्राइवेट नेटवर्क में बैठा है। सो कैन आई टेक ऑल दिस मशीन्स टू हिज नेटवर्क, वहां पर मैं होस्ट करूं? इज इट पॉसिबल? नहीं। सो व्हाट आर वी डूइंग, वी आर गेटिंग दैट क्लाइंट टू आवर नेटवर्क। अब जैसे सपोज ये नेटवर्क है मेरा, ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है इसमें 250 मशीन में बनाऊंगा, 500 मशीन बनाऊंगा, बट आई हैव डिसाइडेड एट द सेम टाइम कि मैं इसमें जो है सेम रेंज में कहीं पर एक 400-500 आईपीस फ्री रखूंगा, ताकि यूजिंग सम मेथड मैं उनको अपना आईपी एड्रेस शेयर कर सकूं। वन ऑफ माय आईपी एड्रेसेस शुड बी देयर ऑन देयर मशीन, जिससे क्या होगा, वो प्राइवेट आईपी यूज करते हुए कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो ये सारा जो हम मेथड यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड पॉइंट टू साइट वीपीएन। वीपीएन में क्या होता है, वीपीएन में ये होगा कि वो यूजर जैसे ही वीपीएन से कनेक्ट होगा, इनफैक्ट यू गाइस आल्सो यू चेक व्हाटएवर वीपीएन यू आर यूजिंग, यू मस्ट बी यूजिंग सिस्को एनी कनेक्ट, बहुत फेमस है वो वाला। तो सिस्को एनी कनेक्ट से कनेक्ट करते ही आपके जो है ऑफिस के जो लिंक्स, कुछ जो डायरेक्टली नहीं खुलेंगे वो ऐसे खुलने लग जाते हैं। कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस होता है जो विदाउट वीपीएन इंटरनेट रहने के बाद भी नहीं खुलते हैं। व्हाई? क्योंकि इंटरनेट एक अलग नेटवर्क है, उनकी एप्लीकेशंस किसी अलग नेटवर्क में। द मोमेंट यू आर इन वीपीएन you are able to access it. Why? Because you are part of that virtual private network, that is VPN. इसका मतलब है कि आपको वहां का एक आईपी मिल गया है, your connection has been established. So that is what we are trying to achieve here. इसको मैंने पब्लिक आईपी दे रखा था ऐसी मशीन को, एक बार मैं लॉगिन करके चेक करना चाहता था इज इट वर्किंग और नॉट, तो एवरीथिंग इज वर्किंग, आई हैव चेक द मशीन। आवर एम इज टू टेक रिमोट ऑफ दिस मशीन यूजिंग आवर प्राइवेट आईपी, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट डज इट से? द कंपोनेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम सेम है। आप वीपीएन टू वीपीएन कर रहे हो, अज्योर टू ये कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, बहुत बेसिक कंपोनेंट्स है जो यहाँ वहाँ चेंज हो जाएगा। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स? फर्स्ट थिंग आई रिक्वायर्ड अ वर्चुअल मशीन, वो मेरे पास है। आई रिक्वायर्ड अ वीनेट, ऑब्वियस है कि अगर मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाई है तो एक वीनेट बनाया ही होगा, राइट? उसके साथ क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स गाइस? फॉरगेट पॉइंट टू साइट, किसी भी वीपीएन के रिक्वायरमेंट्स क्या है? जो पॉइंट टू साइट में नहीं आ रहा है वो आई विल ओमिट दैट लेटर। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वीपीएन? VNet gateway, local network, VIP connection. Right. So it's so I'll require a VNet, which I already have. Will require a virtual network gateway.
I already have, I have created. This is the resource which takes time, 40 मिनट लगते हैं बनने में, right? We need connections, but connection जो है ये site to site में लगता है. So in this case we will not require a connection. इसमें कोई एक और configuration है वो हम देखेंगे. Network, local network gateway. Do we need this local network gateway? What does it present? Local network gateway क्या present करता है? Yes guys, when will we use local network gateway और कब use होता है वो? So we enter the information of remote tenant or client or remote network, you can say, to connect to it. Correct guys. So local network gateway, are we going to then, are we connecting to networks here? Are we which practical are we doing now? Point to site. So is there are there two networks? Is there any network at the other side? At the other side, do we have a network or do we have a user? Now we have a user. Right. So there is no network. We do not have to represent any network. Hence, we do not require a local network gateway. Public IP, yes, we'll require a public IP, and then we'll do the connection. So we have all this. By the way, to have this virtual network gateway, what is the requirement? One unique thing which is required. It's subnet gate, no, gateway subnet. Right. We required a subnet named gateway subnet. Right. उसी के ऊपर ये resource deploy होता है. So once that is deployed, so what do we do? Once that is deployed, ये यहाँ तक हो गया suppose. So then there are multiple methods, guys. We are learning just one method. Interview में भी कोई पूछता तो you say that हाँ there are methods, but I know one method. इस पे हमने एक बार काम किया था. So we'll explain it now. Okay, this is certificate method. How to establish a point to site VPN using certificate method. So very first thing is you will require a certificate, right? Certificate, we will create a certificate here in training, but actual environment में आपको certificate team अलग होगा, बना बनाया certificate आपको मिल जाएगा. Create VNet, I have already done that. Create root certificate, I have already done that. Client certificate, I have already done that. Export certificate, I have done that. ये हम लोगों ने कल देखा है already. ठीक है. Then configure the point to site configuration. So let's do this. Are you guys getting it? Any confusion? Anyone? Yes, guys. What about others? I got one answer on one or two answers on chat. What about others, guys? Are you getting it? Yeah, it's clear. So here I have deployed resources. One virtual machine I have created. One gateway I have created. And for that gateway will require a public IP. So this is virtual network gateway. This is public IP. This is the virtual network I have created. And this is the machine which I want to control using the private IP. Okay, this IP I want to use and take remote to this virtual machine. So if you try now, it is not possible. Why? Because I am in a different network and this is in a different network. We're looking at this. Do you think this will work, the RDP? No. See, we have got the error. So this is our aim to achieve this, that I should be able to take remote using the private IP.
So let's go here. And what does it say? Let's have a look at this. It says configure the point to site connectivity. So where do we do that? कहाँ पर configure करेंगे हम लोग? Networking. Okay, I'm under networking. Now where? Virtual network. Virtual network, where do you want me to click? That below it. Yeah. Sorry guys, what's up? Can you see the cursor moving, guys? Yes. Okay, I thought the screen. Yes, guys. So where will we go now? Peering. Someone says peering. Let's check peering. बिल्कुल भी practice नहीं हो रही guys. Where do you configure site to site VPN? So it will be on gateway subnet. Right. So we need to go to gateway. Not subnet. Don't call it subnet. It's just a gateway. It is Okay, sir. resided on your subnet, but we are not doing anything on the subnet. Subnet is just there, so you can reside it somewhere, right? You're not configuring anything actually on subnet. You're configuring everything on your virtual network gateway. This is a service, a different service. It is residing on this VNet, or is VNet का कौन सा subnet? Gateway subnet. That is the address of this service. That's all, nothing else. But you will always use the term VPN gateway. So if we had to do site to site, we would have clicked on connection. But now here we have to do point to site. So I click here. Configure now. I just have to give any name. So we'll see RDP with private IP. This is the name. And I think it's not working. No, I think that's the IP range. Sorry, the address pool name. Here. So this is RDP with, or this could be any name. Okay, guys, it's not necessary कि नाम में कोई convention नहीं है यहाँ पर. Where we have naming convention, I'm telling you this very explicitly, and I'm repeating that many times. Like subnet वाले में gateway subnet, it has to be there. Okay. So ये नाम में कोई compulsion नहीं. You can give any name. I'm giving that name. Yes. Before that, come here. Yes. Which address pool is this? What do you think? ये कौन सा address pool की बात कर रहा है? आपका मशीन तो ऑलरेडी बन गया है, राइट? आपका वर्चुअल नेटवर्क गेटवे जो है उसका सबनेट ऑलरेडी बन गया है. तो अब ये और कौन सी एड्रेस पूल की बात कर रहा है? Yes guys, any guess? I explained it कि how it works. तो उन्हीं में से एक component है. How does it work? So this will be the location or the pool from which an IP will be given to the computer connected to this network. Perfect guys. Yes. So this is the pool or this is the CIDR range जहां से उन लोगों को एक IP मिलेगा जिसने the moment you get connected to VPN उसको यहाँ से एक IP मिल जाएगा. And this IP and the other IP जहां पे मेरा computer, they are able to communicate with each other. So I can give anything, any IP here. Obviously, which is not being used. If that is being used already, I cannot use that. अगर ये मैंने किसी और subnet को दे रखा है तो can I use it? I cannot. Got it, guys? Yeah. So now this CIDR and the other one, जहां पे मेरी machines है, these two will talk to each other. Which this one?
So this machine we have created for P2S. So this machine is in which VNet? It is in this VNet and default subnet. So if I go to this subnet, so this VNet and check subnet. So my machine is a part of this subnet. My gateway is being installed on this subnet, gateway subnet. और उसके अलावा मैं एक और रेंज दे रहा हूं जहां पर जो भी ये VPN से यूजर्स कनेक्ट हो गए ना, वो लोग उसका हिस्सा हो गए, this one. So ultimately these users will talk to these users. Okay guys, are you getting it? I'll have to use any range which is not have been used already. Then it comes to certificate. How to create certificate? It is definitely not your job. कभी भी नहीं आएगा आपको, इंटरव्यू में भी नहीं आएगा, कहीं पर भी नहीं. But good to know information हमेशा better होती है. And for practice, you can create this यहाँ से. You'll have to open a PowerShell का ये PowerShell portal और in administrator वाला, ये वाला यहाँ पर आना है, right click, run PowerShell as an admin. And once you see this, यहाँ पर बस आपको ये जो है copy paste करना. Guys, this is about to finish. If this finishes, we are starting without any break with the same link. Okay. तो आपको बस ये copy paste करना है, ये 3 certificates बन जाएंगे. उसके बाद बन जाने के बाद क्या करना है, configuration कैसे करना है, we'll see that. वैसे भी कल तक हमने लास्ट सेशन में भी यहाँ तक किया था. So whoever has joined late, that is fine. अब से हम नया टॉपिक मतलब न्यू स्टेप्स शुरू कर रहे हैं. So let me stop this guys and we'll start immediately.